So, under strategic management, today we are in strategic leadership. So, strategic leadership means we mean ahead, other will be followers. So, leadership traits, leadership, number of definitions are there. So, one is known leader, one is unknown leader. Okay. So, leaders also, one is past, present, future leader. Now, when it is in connection with business leadership, then meaning is different. Okay. So, in this regard, regarding leader, Lao Tzu saying, a leader is best when people barely knows he exists. मतलब लीडर है, मालूम ही नहीं है कि यह लीडर है, वो अपना काम कर रहा है. When his work is done, his aim fulfilled. काम कर लिया, पर्पस सॉल्व हो गया. तब क्या है, यहां भी डिस्प्यूट रहेगा, who did it? Everyone will try to claim we did it ourselves. सो लीडरशिप का यहां ये नहीं है कि क्रेडिट लेना. ठीक है, लीडर है, काम किया, काम कंप्लीट कर दिया, दैट्स ओवर. एंड इंस्टेड ऑफ आई दे प्रीफर वी. अगेन, in this regard, write down strategic leadership. Sets the firm's direction by developing and communicating vision of future. Strategic leadership. Firm's direction. Sets the firm's direction. Developing and communicating vision of future. तो लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, फर्म का डायरेक्शन, उसको डेवलप करेगा, इन्फॉर्म करेगा, कम्युनिकेट करेगा सभी को, और विजन क्या है फ्यूचर का, दैट इज कमिंग अंडर स्ट्रैटेजिक लीडरशिप. A manager is a strategic leader. A manager is a strategic leader. Has to play leadership role. To play. Visionary, chief entrepreneur, and strategist, chief administrator, culture builder, resource acquirer, and allocator,
capabilities builder, process integrator, crisis manager, spokesperson, negotiator, motivator, arbitrator, policy maker, policy enforcer, and head cheer head cheerleader. So by this what happens? What we see in business also, what role a manager has to play. So what role a manager has to play? Here important is appointed manager will do. If a person is not appointed, say owner will act as a manager, because person appointed, that person will do. Otherwise, owner will do. So as a owner. So here important is a manager, you see, visionary, vision, mission, values, goals, this type of wordings are there. So manager, visionary, chief entrepreneur and strategist, तो टॉप में है, वो चीफ है. चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखना होगा. चीफ, दैट इज चीफ एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर बिल्डर, काम कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्या कल्चर होना चाहिए, सिस्टम क्या होना चाहिए. रिसोर्स एक्वायरर एंड अलोकेटर, कहां से क्या अरेंज करना होगा, कहां से लाना होगा, सब अरेंज करेगा और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दैट इज अलोकेटर. कैपेबिलिटीज बिल्डर, फर्म क्या कर सकता है, एक आदमी से कितना काम लेना है, कौन क्या करेगा, फाइनली बिल्डर. प्रोसेस इंटीग्रेटर, सबको इंटीग्रेट करना, जितना भी काम है. क्राइसिस मैनेजर, कहीं भी शॉर्टेज है, कहीं भी कमी है, कुछ शॉर्ट हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, उसको भी मैनेज करेगा, क्राइसिस मैनेजर. स्पोक पर्सन, हर क्वेश्चन का आंसर भी देगा वो. निगोशिएटर, कहीं भी जरूरत होगा तो निगोशिएशन करेगा. मे बी एम्प्लॉय, मे बी सप्लायर, मे बी सेलर, मे बी बायर, मे बी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हर के साथ निगोशिएट करेगा. मोटिवेटर, सबको बोलेगा अच्छा से मन लगा के काम करो, सक्सेस होगा, तो दैट इज मोटिवेटर. आर्बिट्रेटर, डिस्प्यूट है उसको सॉल्व भी करेगा आर्बिट्रेटर बनके. पॉलिसी मेकर, करना क्या है. पॉलिसी इन्फोर्सर, फिर करना क्या है और उसको इंप्लीमेंट भी करेगा, इन्फोर्सर. हेड चीयर लीडर, और माने करते रहो, काम करते रहो, गुड, तो उसको चीयर लीडर वाला काम भी मैनेजर करेगा. तो व्हाट हैपेंस, so many things are there which a leader has to do. In business terms, manager is a strategic leader. So manager is a strategic leader. ठीक है. Again, manager has five leadership roles to play in pushing for good strategic execution.
1. Close monitoring. 2. Promoting. 3. Responsive to change condition. 4. Ethical. 5. Corrective actions. Corrective actions. Example: N.R. Narayan Murthy. Okay. So, celebrated. Business leader. So, they are declared business leader because they have achieved something and they made the organization at the top. Okay. CEO of Infosys. Infosys actually information system. Okay. So, to them this type of credit goes. They have done the role, they played the role of leader. They are business leader, they are not political leader. Other one more come words. Dhiru Bhai. Ambani. Reliance Group. Then extension is Mukesh Ambani, Anil Ambani. Okay. So, Dhiru Bhai Ambani, Mukesh Ambani linked because same thing carried on. Anil Ambani, some questions were there. Here interesting is, in long run, again if success, then again things will mold. Finally, who is winner is getting credit. Past done number of wrongs, but finally achieved. Then total credit will be given. Right? Again. So, Dhiru Bhai Ambani, Reliance Group. Okay? So, strategies. Corporate goals. Corporate goals. Okay. A strategic vision. Strategic vision. Okay. Now, new name Gautam Adani. So, hard work,
hard work, okay, values, facing obstacles, facing obstacles, be in the field, fight back, ओके। अडानी ग्रुप के साथ ये सब हो रहा है, बट फील्ड में है, फाइट बैक करता है, मैदान छोड़ के नहीं भागता है, ठीक है। और पास्ट हिस्ट्री, हार्ड वर्क। हियर इंटरेस्टिंग इज सक्सेसफुल बिजनेसमैन, फर्स्ट दे आर सक्सेस, देन फर्दर एडिशंस आर देयर। पहले वो लोग खुद सक्सेस होता है, उसके बाद बाकी लोग को ऐड करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फेथ, बिलीफ। ये सब वर्ड को ध्यान में रख के आपको आंसर सब लिखना है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट राइट डाउन, leadership role in implementation. So, strategic management process. Okay. Now, in this regard, implementation, to say one word is design, leadership, implementation. Implementation. Here we are having organization, information system, management control, reward system, management development, feedback, policy formulation, strategic planning, and environmental scanning, revolving around presentation can be in a different way, and it is ongoing process. ये चलता रहेगा, ये एंड नहीं है। सो रिगार्डिंग लीडरशिप, डिजाइन करना होगा और उसको इंप्लीमेंट भी करना होगा। ओके, एंड ऑल आर interrelated, all are interrelated.
A strategic leader has several responsibilities, including the following. Now, making strategic decisions, formulating policies, plan, implement, effective communication. Effective communication, we mean clear, no doubt, managing human capital, managing change, strong corporate culture, strong corporate culture, high performance, high performance. Now, leadership styles. So, before that, what we see, a strategic leader has several responsibilities. So, making strategic decisions, formulating policies, effective communication, managing human capital, managing change, strong corporate culture, high performance. So, here what we see, by going through so many things, maybe if question asked, you can write down number of points in your own. Okay. So, while writing the answer, you have to follow what the question is. Answer should be in the line of question. This is very important. If studied properly, let them ask the question. Your answer will be automatically 60-70% in the line. Even if you don't know specific, but your general answer will also match. This topic is such. Okay? Because we don't have any law for this. There is no section. So, while writing answer, question, answer in the line of question. Okay? So, leadership style. Now, one is transformational, and other is transactional. In this uses charisma and enthusiasm to inspire people to exert
for the good of the organization. Here, focus is more on designing designing systems and controlling the organization's activities. With improving current situation. तो फर्स्ट में क्या है, अपना कैरिस्मा एंथुसियाज्म यूज करके उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, और सेकंड में पॉलिसी मेकिंग, सिस्टम, ये सब डिजाइनिंग, इस पर ज्यादा ध्यान देता है. ठीक है. नाउ देन वन मोर इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल. Strategic control. This is core of the management process. Now, आप बिजनेस कर रहे हो, आपका स्ट्रेटेजी है, सब इंप्लीमेंट किए, फाइनली आपको देखना होगा वो आपके कंट्रोल में है कि नहीं. आप सब किए, कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, देन क्वेश्चन कम्स व्हाट बिजनेस यू आर डूइंग. सो मैनेज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कोर ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस. ठीक है. अगेन, core of the management process. ठीक है. Now, monitoring the activities, measuring results, correcting deviations, adapting the situation or the system, चेंज मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, मेजरेबल, controllable, feedback, then comes organizational control. Under this operational control, so these are related to tasks of individuals. कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक से कर रहा है, नहीं कर रहा है. मैनेजमेंट कंट्रोल्स, divisions,
सब यूनिट्स, goals, short and long. Then comes strategic control. Implemented as planned. Results. Intended. Results intended. Now, strategic controls more we can have 4 types. Premise controls, premise control, strategic surveillance, special alert control, special alert control, and then comes implementation control. Now, strategic control. So, surveillance means okay, keeping watch. Alert control means time to time something somewhere going wrong or something, be alert. Implementation, it means whatever plan you have implemented or not. Premise controls, this is related to assets. Related to assets. Okay. In assets, all are coming. Not that building coming. Okay. So, where your business is, that established business, there you have full control or not, or what type of control you have, that is premise control. बिजनेस में कोई भी बड़ा बिजनेस, उसका अपना एक एरिया होता है, उस पर उसका अपना कंट्रोल होता है, यह भी एक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ दैट कंट्रोल इज इन रिस्क, यू आर ऑल इन रिस्क, सब खतरा में चला जाएगा. ठीक है. नाउ next, strategic. Performance measures. Strategic performance measures. Now, परफॉर्मेंस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर. तो यहां पर ध्यान रखना है, पहले इसके मीनिंग को समझना है. काम हुआ, जो काम हुआ, अच्छा हुआ, खराब हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ,
कैसा हुआ, क्वालिटी कैसा हुआ, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, इंप्लीमेंटेशन, प्लान प्रोग्राम बनाए, इंप्लीमेंट किए, काम हुआ, अब चेक करेंगे, दैट इज मेजर। सो स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस measure again. So strategic performance measure here SPM, strategic performance measure. Effectiveness, outcomes, प्लान प्रोग्राम बनाए, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर दिए, उसके बाद फाइनल जब रिजल्ट आया, अच्छा आया, तो वहां पे वर्ड आएगा इफेक्टिवनेस। खराब आया इनइफेक्टिव, इफेक्टिव, इफेक्टिवनेस रिलेटेड टू रिजल्ट, ठीक है। अगेन मैनेजिंग the political aspect of implementing a strategy. So political aspects, one is supportive, one is rivalry. This is good. When it is a case of rivalry, okay, be alert. Answer is be alert. Political may be internal, external. Internal, this is organization. This is environment. Now, question can be types of strategic performance measures. One, financial मेजर्स, क्या क्या हो सकता है, ROI measures, return on investment, okay, profit, okay. Second, customer satisfaction measures, so customer retention,
loyalty, quality product, quality product. Third, market measures, market measures. न्यू कस्टमर एक्विजिशन, नया नया कस्टमर आया. एंड रिटेन कस्टमर्स. अगर ये है, इसके अंदर में और एक वर्ड आता है वेरी कॉमन, रिपीट ऑर्डर्स. रिपीट ऑर्डर्स का मतलब हो गया कस्टमर सेटिस्फैक्शन. फोर्थ, एम्प्लॉय मेजर्स, एम्प्लॉय measures. So here turnover, employee turnover, okay, talent or talented employees, positive work environment, innovation measures, innovation measures, okay, innovation measures, research and development, patents, new products, innovations that can be measured. Sixth, environmental measures. Energy consumptions, waste management, carbon emissions, etc. Okay. So, what we see, types of strategic performance measure, direct question they can ask. ठीक है? So, we can write down 6 words along with some content in terms of language. Now, here interesting is, when the question will be there, what should be our answer and how much should be our answer. This topic is such that if your study is proper, writing will be a never ending. माने आप लिखते रहोगे, खत्म ही नहीं हो रहा है. तो आपको मार्क्स और कंटेंट को मैच करना होगा, कितना लिखना है. बट पॉइंट्स प्लस सम एक्सप्लेनेशन ऑलवेज, एटलीस्ट मीनिंग ऑफ द पॉइंट्स. ठीक है? यू हैव टू राइट डाउन. अगेन, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या था, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर. फिर स्लाइड क्वेश्चन में डिफरेंस है, द इंपॉर्टेंस ऑफ
strategic performance measures. ठीक है, इसका आंसर डिफरेंट है. गोल अलाइनमेंट, माने स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे करेंगे अलग चीज है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है. तो हम लोग का इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग का जो टारगेट था, प्लान था, गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ. गोल अलाइनमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, continuous improvement, external accountability, external accountability, ठीक है, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी. सो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक, अपना मेन टारगेट रहेगा गोल अलाइनमेंट, रिसोर्स एलोकेशन. फिर इंप्रूवमेंट, आंसरेबल, अकाउंटेबिलिटी इज अगेन choosing the right strategic performance measures. Choosing the right performance measure. तो हम लोग जो मेजरमेंट करेंगे, कुछ भी मेजर कर लिया कोई मीनिंग नहीं है. तो जो भी मेजरमेंट करेंगे उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए. ठीक है, क्या क्या लॉजिक होना चाहिए. रेलेवेंस, डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा क्वालिटी एंड डेटा timeliness. Data timeliness. Okay, so what we see, इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग. तो याद रखने का आंसर एक ही है, क्वेश्चन को समझना होगा. तो चूजिंग द राइट स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, जो कैलकुलेट करेंगे वो डेटा, जिसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किए, तो उसका रेलेवेंस क्या है, वो भी एक मेजर है. तो रेलेवेंस, डेटा अवेलेबिलिटी, आपके पास डेटा होना चाहिए, प्रॉपर डेटा होना चाहिए. अदरवाइज वन कंसेप्ट इज, इफ आवर डेटा इज रॉन्ग, रिजल्ट विल बी रॉन्ग. तो डेटा होना चाहिए, सही डेटा होना चाहिए, एजम्पशन बेस्ड नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो डेटा का क्वालिटी भी इसमें आ गया, प्रॉपर डेटा. एंड हियर इंटरेस्टिंग इज इंफॉर्मेशन, कंप्यूटेशन, मेजरमेंट, एवरीथिंग शुड बी टाइम बाउंड. जैसे दिसंबर एंड हुआ, आपको एनालिसिस करके हफ्ता 10 दिन के अंदर में पूरा कर देना है. अब इसमें समझने का है, स्टॉक मार्केट में एक दिन नहीं दिया जाता है, मालूम है. आज का डिसीजन आज होगा, आज का डिसीजन आज होगा. तो कितना जल्दी से आप उसका एनालिसिस करके निकाल सकते हो, उतना अच्छा डिसीजन आपका होगा. और जो डिसीजन लेने में रॉन्ग किया, लूजर हो जाएगा. तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, दिस इज मार्केट. तो अवेलेबिलिटी, डेटा क्वालिटी, डेटा
टाइमलीनेस। तो डेटा टाइमलीनेस, computation within time, decision or any further action plan as earliest is best, because time gone may be data not relevant. अभी 5 साल पुराना डेटा लेके क्या करेंगे हम लोग, 4 साल पुराना क्या करेंगे, आज का बात हो रहा है, अभी का डेटा चाहिए। ठीक है। सो इन दिस रिगार्ड नाउ सम क्वेश्चन आंसर्स आर देयर, एमसीक्यू क्वेश्चंस आर देयर, दैट आल्सो विल डू इट। ठीक है। सो वी आर इन एमसीक्यू डायरेक्ट। 1 dash leadership style may be appropriate in turbulent environment. A. Transactional, transformational, C. Autocratic, D. None of these. So, most appropriate answer, transactional, transformational, today itself we have done. ऑटोक्रेटिक, नन ऑफ दिस। टर्बुलेंट का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो जा रहा है, टर्बुलेंट। जैसे प्लेन में बैठता है ना आदमी, वेदर कंडीशन खराब होने से जैसे प्लेन लगेगा नीचे आ गया, ऊपर आ गया, ये सब हो रहा है, जैसे लगेगा क्या है नीचे, समझ गए। तो टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट सिचुएशन में क्या होगा, अपने को रिसेट करो, माने ट्रांसफॉर्म करो, चेंज करो। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट। एन ऑर्गेनाइजेशन जेशनल स्ट्रक्चर विथ कॉन्स्ट्रिक्ट मिडिल लेवल इज, कौन सा होगा, डिविजनल, नेटवर्क, आवर ग्लास, मैट्रिक्स। तो इसके अंदर में मेन वर्ड है ये वर्ड कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो आंसर सी होगा। उसमें हम लोग एक इस तरह का चार्ट बनाए थे और ये हो गया था मिडिल। ठीक है। तो बीच में कम हो गया, दिस इज इंडिकेटिंग आवर ग्लास, आंसर विल बी सी। तो डिविजनल, नेटवर्क, आवर ग्लास, मैट्रिक्स, आवर ग्लास। ठीक है। तो ऊपर में हाई रहेगा, मिडिल में लो, फिर लास्ट में फिर से बड़ा हो जाएगा। यू आर द हेड ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी व्हेन यू फोकस ऑन टोटल or aggregate management function in the sense of embracing the integrated activities of a complete department. Complete department एक्चुअल में क्या होता है, ये लैटिन वर्ड सब है। ठीक है। आर प्रैक्टिसिंग, तो क्वेश्चन है आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल। आंसर क्या आ रहा है, कोशिश करो। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल। तो मैनेजमेंट कंट्रोल, गुड। तो आंसर विल बी बी। तो मैनेजमेंट कंट्रोल। फोर्थ, which of the following would be chosen by the core strategist to implement operational control? So which of the following would be chosen by the core strategist to implement operational control? A. Premise control, B. Special alert control, C. Implementation control, D. Budgetary control. To implement operational
कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल में क्या होता है, पहले से प्लान प्रोग्राम बनता है, एक बजट बनता है, स्लिप होने का चांस है, रिस्क है बाय मिस्टेक इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। ठीक है, नाम इंप्लीमेंट है बट एक्चुअली इट इज बजटरी कंट्रोल। फिफ्थ, compliance identification and internalization are the three process involved in compliance identification and internationalization are the three process involved in defreezing, refreezing, changing behavior patterns, breaking down old activities. So compliance, identification and internalization are the three processes involved in refreezing, defreezing, and third is changing process, changing behavior पैटर्न। चलो ये भी ठीक है। सिक्स्थ, इसको ध्यान से, अभी जस्ट हम लोग किए हैं ये वाला अभी, ठीक है। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, अभी जस्ट हम लोग किए, लिखे थे ना, देखो ध्यान से, विच वन इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, अभी कुछ 5-6 कुछ लिखे थे हम लोग। देखो, एनवायरमेंट मेजर्स, इनोवेशंस, एम्प्लॉय, और आगे जाओ, प्रीमाइस कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। तो इसके अंदर में हम लोग क्या देखे, क्या नहीं है, जो नहीं है वो ऑपरेशनल कंट्रोल। आंसर विल बी ए। सो MCQ no problem, but if it is subjective then content writing will be important. Okay, so next time we will start with new subject, later on test will be there. Okay.